welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examination. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं 25 MCQs based on the articles related to president. Okay, and we have tried to include all the PYQs. Okay, ऐसे questions जो already exams में आ चुके हैं. And remember that this is the first set of questions that we are doing. We'll be doing more such sets related to the articles related to the president of India. Okay, all right. So everyone, if we talk about any government exam that has current affairs or general knowledge in as a part of syllabus, this this polity subject is something which is very important. Okay, either if you're preparing for MPPSC, UPSC, MPPSC prelims, UPSC prelims, right, any other civil service exam, any state PCS exams, right, or any other administrative post, पॉलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रीड. ओके, और उसी पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका प्रेसिडेंट. ओके, ऑलराइट, यू शुड नो all the rights, all the eligibility criteria, all the articles related to president of India. Okay, all right, and for that particular reason this topic is something which is very important from your exams perspective. Okay, so without any further delay, let's proceed further and let's discuss question number 1. Just give me a quick moment. Under which article is president of India established as the head of state? Okay, इसका मतलब है किस आर्टिकल के अंडर जो प्रेसिडेंट है इंडिया के उनको स्टेट का हेड घोषित किया जाता है, राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट? द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका, इट विल बी आर्टिकल 52. Please have a note of it. Okay, all right. If we talk about this particular article, it states, if we talk about article 52, तो article 52 क्या कहता है? There shall be a president of India. There shall be a president of India. Okay, all right, this is article 52. Okay, so it establishes the president as the constitutional head of the country. Okay, if we talk about this particular article, it establishes the president as the constitutional head of the country. Head of the country. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये आर्टिकल याद कर लीजिए. ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन है ना, दैट विच आर्टिकल इज द president of India established as the head of the state, right? Under which article? So you should know it is article 52, which says that there shall be a president of India. Okay, and it also establishes president as the constitutional head of the country. Okay, all right, so this is about this particular article. Let's proceed further and let's move to the next question. Okay, so the president of India is elected by which body? This question is also very important, and this question is asked in many previous exams also, कि president जो होते हैं इंडिया के उनको कौन elect करता है, right? Number A, लोकसभा and राज्यसभा. B, electoral college consisting of elected members of parliament and state legislative assemblies, Supreme Court judges and the Union Cabinet, right? So the correct answer for this particular question will be electoral college consisting of elected members of parliament and state legislative assemblies. Okay, all right. So if we talk about this is again very important. So if we talk about the electoral college, इसमें क्या क्या होते हैं? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ऑल राइट. एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 54, यहाँ से इस चीज को आपको याद रखना है. आर्टिकल 54. ठीक है, अभी हमने कौन सा आर्टिकल देखा? आर्टिकल 52, जिसके अंडर क्या होता है? ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को एस्टैब्लिश करता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 54, सो इट आउटलाइंस द इलेक्टोरल प्रोसेस. ठीक है, इंक्लूडिंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको आउटलाइन करने का काम करता है आपका आर्टिकल 54. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स प्रोसीड फर्दर, एंड नाउ हियर वी come
to the third question. Under which article can the president proclaim a constitutional emergency? Okay, now this again is very important. किस article के under president जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पीवाईक्यू से लिया गया क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी आर्टिकल 356. प्लीज इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑलराइट. सो इट एक्चुअली अलाउज, इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 356, it allows the president to impose president's rule, to impose president's rule in a state if constitutional machinery fails. Okay, if constitutional machinery fails, or if there is any constitutional emergency. Okay, all right. So this is article 356. Article 356. Okay, so far we have talked about article 52. Okay, and we have also talked about 54. Okay, all right. So this article 52 establishes president as the head of the country, and article 54 is associated with the election process, and now article 356. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं and let's talk about the fourth question. The president of India holds office for how many years? So the question is related to tenure. Okay, all right. So if we talk about it, the correct answer to this question will be 5 years. Please have a note of it. ठीक है, अभी कौन सा article involved है इसमें भी बात कर लेते हैं. Article 56. Okay, so we have talked about article 52, we have talked about article 54, now we are talking about article 56. Okay, and this article 56 states that the president serves a 5-year term. Okay, all right. So if we talk about the tenure, it is 5 years. ठीक है, याद रखिएगा. And it is coming from the article 56. article 52 देख लिया, 54 देख लिया, 56 देख लिया, and 356 देख लिया. Okay, all right. Now let's move to the next question. Which article deals with the impeachment of the president? Okay, all right. So if we talk about impeachment of the president, ये topic अपने आप में ही बहुत important है. If you talk about polity, ठीक है, तो impeachment of president ये बहुत important topic है. बहुत सारे पेपर्स में एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बी इट एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल. ओके, और लाइक इफ वी टॉक अबाउट एनी अदर एग्जाम which has polity as a part of the syllabus, this question is important. ठीक है, all the questions that we are doing are very important. ठीक है, so which article deals with the impeachment of the president? The correct answer here will be article 61. ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा important है. So if we talk about article 61, it provides the procedure for impeachment. Remember that. Procedure for impeachment. Okay, for impeachment. ओके, तो इम्पीचमेंट के लिए जो प्रोसीजर बताता है वो कौन सा आर्टिकल है? आपका आर्टिकल 61. ओके, ऑलराइट. सो इफ द प्रेसिडेंट वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल जो आपका 66 है, सॉरी आर्टिकल जो आपका 61 है वो क्या बताता है? इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट. ओके, ऑलराइट. इफ द प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्पीचमेंट होगा. और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 67, जो पूरे प्रोसेस बताता है. ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है. दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Who administers the oath of office to the President of India? Okay, all right. So if we talk about this question, we have 4 options: Chief Justice of India, Prime Minister of India, Vice President of India, Speaker of Lok Sabha. Okay, so if we talk about this particular question, the correct answer will be the Chief Justice of India. Okay, यहाँ पे आपका जो correct answer होगा वो होगा Chief Justice of India. Okay, all right. So अभी यहाँ पे भी एक बात याद रखिए, यहाँ से associated है आपका Article 60.
ठीक है। आर्टिकल 61 अभी हमने देखा है, ठीक है। आर्टिकल 61 क्या करता है? आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के बारे में है, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। और अगर हम आर्टिकल 60 के बारे में बात करते हैं, सो आर्टिकल 60 के थ्रू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ टू प्रेसिडेंट एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, रिमेंबर दैट, ठीक है। चलिए, नाउ विच फंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑलराइट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी कुछ मेजर आर्टिकल्स जो हम अभी पढ़ चुके हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 स्टैब्लिश करता है प्रेसिडेंट को एज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हमने 54 पढ़ा। तो आर्टिकल 54 क्या करता है? आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिकल 356 देखा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है तो, ठीक है। फिर टेन्योर के बारे में बात की, तो टेन्योर के लिए फिर से हमने देखा आर्टिकल 56 की 5 इयर्स का टेन्योर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इम्पीचमेंट से रिलेटेड बात की, तो इम्पीचमेंट 61 से होता है, ओके, ऑलराइट। And abhi, who administers the oath of office to the president? It comes from Article 60. Okay, all right. So 6 questions and 6 articles we have discussed. ठीक है, चलिए। तो who administers the oath of the office to the president of India? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ विच फंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा फंड जो है वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है? सो वी हैव 4 ऑप्शंस: पब्लिक प्रोविडेंट फंड, States Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, and none of the above. So the correct answer over here will be Contingency Fund of India. Please have a note of it. That is option number C. Okay, all right. So if we talk about Article 267 Part 1, remember this. Okay, it establishes that the contingency fund which is used for the urgent government expenditure can be used by the, or it is under the control of the president of India. Okay, all right, remember this is important. All right, now the president can dissolve the Lok Sabha on the recommendation of whom? Now we have 4 options again: Lok Sabha speaker, election commissioner, council election, sorry, election commission, council of ministers या vice president। यानी किसके कहने पर जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आएगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है अगर रिकमेंड करते हैं, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। ओके, ऑलराइट। सो इफ वी टॉक अबाउट इट, द प्रेसिडेंट टेक्स द एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and by their recommendation president can dissolve the Lok Sabha. Okay, all right. So yes everyone, let's move to the next question. Question number 9: which article specifies the qualifications required to become the president of India? Okay, now this question again is asked in many of the examinations. Okay, in the recent exams also this question has been asked. Okay, so which article specify the qualifications required to become the president of India? The correct answer to this question will be option number B, that is Article 58. Okay, all right. So we have talked about 52, 54, 56, 60, 61, right? 356, and now we are talking about Article 58. Okay, so which article specifies the qualifications required to become the president of India? Okay, all right. So if we talk about Article 58, what it states, सबसे पहले तो a person should be citizen of India. Okay, if this is the first qualification as per this Article 58. Okay, so which article specifies the qualification of India to become which article specifies the qualification required to become the president of India? The correct answer over here will be option B, Article 58, citizen of India. Okay, this is first criteria: 35 years of age, at least 35 years of age. Okay, all right. Qualified for election as a Lok Sabha member. Lok Sabha member.
ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है और ये सारी की सारी बातें आर्टिकल 58 स्पष्ट करता है. ओके, ऑलराइट. सो आर्टिकल 58 states that the president must be number one citizen of India, at least 35 years of age, okay, and qualified for election as a Lok Sabha member. Remember that. Okay, let's move to the next question. We are discussing question number 10. The president of India can summon a joint session of parliament under which article? Okay, we have four options: Article 108, Article 110, Article 112, Article 115, and the correct answer to this will be option number A, Article 108. Okay, alright. So if we talk about this particular article, it allows the president to summon a joint session of parliament in case of legislative deadlock. Okay, alright. So this is about this particular article. Now, under which article does the president appoints a prime minister? Very important question. Okay, 74, 75, 76, 78. Now see, if we talk about if you are someone who has learnt it in this manner, कि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से एसोसिएटेड आर्टिकल है वो 70s में है, राइट. बट if we talk about options like this, जब बहुत close options होते हैं, right, then you have to be specific. So the correct answer here will be article 75. ठीक है, ये याद रखना है आपको. Alright. So if we talk about this article, it states that the president appoints the prime minister, appoints the prime minister and other ministers, okay, on the advice of the prime minister. So first of all, the president is going to appoint the prime minister and then other minister on the advice of the prime minister. This is stated in article 75. ठीक है, all right. तो चलिए आगे बढ़ते हैं and let's talk about question number 12. The president can issue ordinance under which article? Okay, so do try to understand कि जब ये पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तब जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट, इशू कर सकते हैं. किस आर्टिकल के अंडर? 123, 124, 126 एंड 130. द करेक्ट आंसर विल बी 123. ठीक है, तो आर्टिकल 123 जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है टू इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट is not in session. ठीक है, तो आपका जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं when the parliament is not in session under article 123. Okay, all right, let's move to the next question. Which article provides for the pardoning power of the president? यानी इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को जिस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में बात की गई है, राइट. 72, 74, 76 and 78. So what is going to be the correct answer over here? It will be option number A, article 72. Please have a note of it. Okay, all right. So if we talk about this particular article, यहाँ पे क्या क्या rights हैं president के as per this article? Grant pardon, grant pardons, reprieves, respites, or remissions from the punishment. Remissions of punishment. ठीक है, अगर किसी को कोई पनिशमेंट है और प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है अंडर आर्टिकल 72 जो पार्डन, रिप्रीव्स, रेस्पाइट्स और रेमिशंस दे सकते हैं पनिशमेंट से. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू राज्यसभा? यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने मेंबर्स को हायर करते हैं टू द राज्यसभा? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, दिस इज इजी क्वेश्चन, option number B, that is 12. Okay, all right. So if we talk about this particular part, right, remember article 80, article 80. Okay, so if we talk about article 80, it allows the president to nominate 12 members to the Rajya Sabha.
ओके ये बात आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक सी चीज है बट याद रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 80 क्या कहता है कि आप 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में फ्रॉम लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस फील्ड सेक्टर्स, ठीक है। ऑलराइट, 12 मेंबर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आर वी वेरी वेरी क्लियर सो फार? Okay, all right. Under which article does the president declare a financial emergency? अब किस आर्टिकल के अंडर में जो प्रेसिडेंट है वो क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, ऑल राइट। सो वी हैव फोर ऑप्शंस, 352, 356, 360 एंड 365 एंड द करेक्ट आंसर विल बी 360। ओके, ऑल राइट। तो अगर हम 360 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो याद रखिए कि जो प्रेसिडेंट है ही कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ओके, ऑल राइट। सो वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती तो जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज threatened, then president can declare the financial emergency. Okay, now question number 16, the president can remove the governor of the state under which article? Okay, now governor of the state can be removed by the president under which article is what the question is asking, ठीक है। तो किस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी आर्टिकल 56, ठीक है। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। ऑलराइट, तो ये क्या कहते हैं? इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 156, इट सेज दैट द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, सो इफ प्रेसिडेंट wants, he or she can remove the governor of state under this article 156. Okay, now if we talk about the next question, which article mandates the president to address parliament at the beginning of each session? So if we talk about this particular article, the correct answer to this question will be article 87. Okay, so article 87 mandates the president to address parliament at the beginning of each session. Okay, all right, that is first session every year. Okay, so this is article number 87. Please have a note of it. Mandates the president to address parliament at the beginning of each session. Okay, all right, so let's now move to the next question. Question number 18. The president can refer matters to the Supreme Court under which article? जो president है वो matters को Supreme Court के अंडर Supreme Court को refer कर सकते हैं किस article के अंडर में? Right, that is question number 18. So the correct answer to this question will be question option number 143. ठीक है कि जो आपका 143 article है, इस article के अंडर the president can refer the matters to the Supreme Court. ओके, ऑलराइट। तो कोई भी अगर लीगल मैटर है तो 143 के अंडर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। नाउ द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? देखिए ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124, ठीक है। याद रखने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ऑलराइट, तो किस आर्टिकल के अंडर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं? सो इट विल बी आर्टिकल नंबर, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, 124. Okay, all right, so yes everyone, let's proceed further and let's move to question number 21. Okay, so here the correct sorry, question number 20. For 19 the correct answer will be option number A, article 124. Now let's move to the next question, that is question number 20. The president can summon parliament under which article? So here the correct answer will be article 85. Okay, all right, so the president can summon parliament under which article? It will be article 85. Okay, all right, so if we talk about this article, this article empowers the president to summon and prorogue the parliament. Okay, so if we proceed further, let's move to question number 21. The president appoints the attorney general of India under which article? Okay, so the correct answer over here will be option number A, that is article 76. Okay, all right, so इससे पहले हम चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ विच आर्टिकल अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
under which article the president appoints the attorney general of India. So here the correct answer will be 6, article 76. Okay, all right. So if we talk about the attorney general, he or she advises the government on legal matters. So under article 76, president can appoint the attorney general of India. Okay, now which article allows the president to grant pardon in case of death sentences? Okay, all right. So here the correct answer will be 72. Okay, so article 72 grants the president the power to grant pardons including in case of the death sentences, right? तो अगर डेथ सेंटेंसेस भी हैं तो कौन से आर्टिकल के अंडर जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 72. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की. द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा अंडर विच आर्टिकल? अभी हमने गवर्नर के बारे में बात की थी, राइट? और यहाँ पर है लोकसभा, right? The president can dissolve the Lok Sabha under which article? So the correct answer to this question will be article 85. article 85 के अंडर जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 23. लेट्स मूव टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर विच आर्टिकल? अगेन, okay, so if we talk about this particular question, the president appoints governor of state under article 155. okay, all right. So governors का जो appointment होता है वो किस आर्टिकल के अंडर होता है? आर्टिकल 155. okay, the next question is the president can declare a national emergency under which article? National emergency under which article? So it will be 352. okay, all right. So a president can declare a national emergency in case of war, external aggression or armed rebellion. okay, all right. So I believe we are very clear with this particular answer. okay, the correct answer over here will be option number A. okay, so yes everyone, this is the first set of the MCQs based on the articles related to president. okay, but these questions were very important. These questions were asked in the previous question papers as well. ठीक है, तो अब चलते हैं towards the end of the video. ठीक है, in the next video we'll be talking about more MCQs based on the articles related to president. okay, all right. I hope you enjoyed watching this particular video. I wish that this video becomes fruitful for your preparation. Until the next time we meet, keep watching, keep growing, and your feedbacks and suggestions, please feel free to post them under the comments. okay, so thank you so much for watching. Stay tuned and do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.